Very good morning to everyone. So we are going to start with the Unit 1, Lecture 1, which is Introduction to Macroeconomics. First, you should know what is the macroeconomics and what is the history of the macroeconomics. As I have told you earlier, that the macroeconomics started after the First World War, which ended in 1919, and which from 1919 to 1930 it was known as the Great Depression era. After that, to come out from that depression era, uh, the responsibility was given to J.M. Keynes, a renowned economist, uh, economic thinker, and well-known economist. With the publication of the General Theory of Employment, Interest and Money in 1936, there was a new emergence in the economic field, which was known as the macroeconomics. So we can say the macroeconomics, the father of macroeconomics is the J.M. Keynes. With J.M. Keynes, the macroeconomics economics was divided. Before it is known as the microeconomics, and after that it is known as the macroeconomics, because we started to study the whole economy as a subject, and in spite of individual unit, in spite of individual production unit, individual consumption unit, individual demand and individual supply, individual production, we started about talking about the aggregate demand, aggregate supply, and the economic growth and economic development. So the after that, to come out from that recession and with the emergence of the new economic deal in 1932 uh, by America, the macroeconomic started. So before the general theory, microeconomics dominated the entire analysis under the assumption of full employment. It was assumed here full employment does not mean that the persons are fully employed, the pupils are fully employed. Here full employment means that all the factors of production means resources, land, labor, capital, entrepreneur and organization. All the factors of production, whatever is land, labor, machine, capital, entrepreneur, people, technology, all the things, whatever is involved in the production system, they are fully utilized. Here full employment means they are used, they are not abandoned, and they are not useless. They are being used for the purpose of production, and they are uh, getting the reward uh, of their use. So before the general theory, microeconomics dominated the entire analysis with the assumption of full employment. Here it was that every thing which was in the economy for the purpose of production, that was completely employed. It was true. Then why? And there was an assumption that the supply creates its own demand. All the resources, if all the resources are fully employed and all the resources are completely employed, and the production is being done and it is supplied in the market, the demand will automatically create. Then the question arises, if the demand is being created automatically, then why there is a recession? There was a big question, why there is a recession? Then it means although there are certain factors of production which are being utilized, but actually they are not having any production if utilization, means their product are not being sold in the market because it may be a less demand,
it may be a overproduction situation. If there is a overproduction situation, it means there is not a full employment. There is a uh, matter of disguised employment. Although they are being treated, although they are being seen that they are employed, but they are actually their uh, contribution in the employment system is almost zero, which is known as the marginal physical productivity is zero. What is marginal physical productivity means the last unit of the production produced by the factors of production is marginal physical productivity. आप जो production whatever you are doing the production, the last unit of the production which you are producing is the marginal production, and the production of your last unit is marginal productivity of the factor of production. But the Great Depression of 1930s broke this belief with a number of devastating outcomes. I am I am telling that the belief of supply creates its own demand was broken, and there was a belief that there was a situation that there is a depression, there is a overproduction, and there is a less demand in the economy. Then J.M. Keynes came with the book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936, and the theory was reversed with a line that it is demand which creates supply. Means supply does not create its own demand, but demand creates its own supply. This was the Keynes. You should note down that the supply creates own demand was set by the Jean-Baptiste, while the demand creates its own supply was set by the J.M. Keynes. The J.M. Keynes came with the idea that there should be a effective demand, means there should first the demand should be created in the market to come out from the depression era, and the supply, when there will be demand, there will be automatically a supply to cope up with the demand or to fulfill the demand of the market, and then it will create a induced investment in the economy, and which will lead a further huge demand in the market, employment, income generation, and automatically this will follow a chain reaction of the demand creation. So this was the background of the macroeconomics starting. Then naturally the question comes, what macroeconomics is about. Macroeconomics is the study of the structure and performance of national economies and of the policies that governments use to try to affect economic performance. I have already told you that before that there was a microeconomics which was the study of individual unit. Means if we were talking about the demand, then we were talking about the individual person's demand. If we were talking about the demand, we were talking about the individual units or production unit, which is known as the firm or industry or anything. The individual units demand, firms demand, utility, individual persons or individual persons utility, production. If we were talking about the production cost, even in the market situation, then we were talking about the single unit, production unit or industry. So it was the market which came in the depression, and the macroeconomics, when the macroeconomics came, it started to study the whole market demand. Means not individual. What is the demand? Suppose we are talking about the demand of a pen.
Then the demand of the pen in the whole market by everyone, by all the persons, whosoever is demanding the pen, the whole market demand of whole market demand, which was known as the aggregate demand. If there are certain production units like there is Rorito, Renault, Mitsubishi, so many firms producing the pen in the market. Then what is the aggregate? Means all those firms demand, not individual firms demand, not a single person's demand. All we were talking about the whole for economy, whole the firms market demand, which was known as the given at the term as the aggregate demand. Supply by the production units was known as the aggregate supply, and here demand and supply were means was in the microeconomics was known as the equilibrium point, but here the Keynes termed it as a effective demand point. It was known as the effective demand. Then the next problem comes, what is the difference between micro and macroeconomics? So then I have already told you that the decision, there was a decision of individual units, no matter it was how large the firm is. Suppose taking the example of pen, it may be a very Parker pen may be a very big firm, very Link Vincia will be a very big firm. Example, here we have taken the example of General Electric's pricing policy. How long it may be a firm? In microeconomics, we were discussing about the, if we are talking about the Parker pen, or we are talking about the Renault, then we are talking about the individual Renault pricing policy, not the whole pricing policy. आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल सेक्टर. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो देन वी आर टेकिंग कि व्हाट इज द टैरिफ रेट ऑफ जियो, माइक्रो इकोनॉमिक्स से. व्हाट इज द टैरिफ रेट प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ एयरटेल, व्हाट इज द टैरिफ रेट ऑफ Vodafone Idea. But if in the microeconomics we are talking about the microeconomics as the whole, then we will talking about the whole industry. Whole industry means the pricing situation of not only the telecom sector, but we will talk about the pricing of the telecom sector, in automobile sector, even in agriculture sector, pricing policy of agriculture sector. तो जब हम किसी एक फर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात किया कि कार की प्राइस क्या होनी चाहिए, बढ़ रही है या घट रही है, या टू व्हीलर्स की प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन पॉलिसी, इन्फ्लेशन मीन्स अभी आपको बताया जाएगा आगे चल करके इन्फ्लेशन, व्हेन वी टीच यू द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड prices of the products are increasing and the value of money is decreasing. जब भाई कोई सामान आप 50 रुपए में खरीद रहे थे, अब वही सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो सामान तो वही है, लेकिन अब आपको उसी के लिए 100 रुपए चुकाना पड़ रहा है. तो then the value of money has decreased and the price of the product has increased. भाई 50 रुपए में खरीदते थे, अब आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं. So it means the value of money, that price money is decreasing and the price is increasing. So when we are talking about the income of a single person, inflation की बात जब हम कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल की पूरी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ रही है या घट रही है. जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बात हम कर रहे थे कि टू व्हीलर की प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स था.
जब हमने कहा कि पूरी इकोनॉमी में प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, तो ये क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेविंग, सेविंग अगर हम बात कर रहे हैं कि हम सेविंग एक वी आर ऑलवेज सेड कि सेविंग इज ए गुड हैबिट। जो माइक्रो के बारे में सही है, दैट कैन नॉट बी ट्रू ऑलवेज विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेविंग इज ए गुड हैबिट, बहुत अच्छी बात है, सेविंग करना चाहिए। बट if in the macroeconomics we talk overall, अगर आप सेविंग करना शुरू कर देंगे तो who will consume? भैया आप इनकम आपके पास अगर 100 रुपया है तो या तो आप उसको कंज्यूम करेंगे या तो सेव कर लेंगे। अगर 100 रुपए में से 80 रुपया आप कंज्यूम कर रहे हैं और 20 रुपया सेविंग कर रहे हैं, तो अगर आपने सेविंग को बढ़ा दिया, 25 कर दिया, तो स्वाभाविक कंजम्पशन बढ़ा घट करके 75 हो जाएगा। अगर आपने फिर सेविंग बढ़ा करके 70 रुपया कर दिया तो आपका कंजम्पशन घट करके 70 हो जाएगा। अगर आपने सेविंग बढ़ा के 30 कर दिया तो इंडिविजुअल में कहा जाता है कि बचत कर, सेविंग इज ए वेरी गुड हैबिट, बट इन फॉर द इकोनॉमी सेविंग इज नॉट ए गुड हैबिट, बट फॉर द इकोनॉमी इट इज बोथ। इफ यू विल सेव, you will put it in the bank, and bank will create the credit, and credit will be given to the industry, and industry will have the investment. It is a good, but for the consumption purpose, for the growth of the economy, for the growth of the GDP, saving is a bad thing. Consumption is a good thing, but in personal life we say saving is a good thing, and हमें अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहिए, ना कि कंज्यूम करना चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज्यादा डिमांड करना बैड हैबिट है, बट फॉर द इकोनॉमी इंक्रीजिंग डिमांड इज ए वेरी गुड थिंग। तो दिस इज द डिफरेंस। इंडिविजुअल लेवल पर हम ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं, हम ग्रोथ ऑफ द फर्म, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री की बात करते हैं, इनकम बढ़ने की बात करते हैं। इंडिविजुअल इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इंडिविजुअल इनकम घट रहा है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि नेशनल इनकम, इफ द नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। So this is, in microeconomics, the decisions are taken about the individual units. In the macroeconomics, we study the behavior of entire economy. Means here you can see economic aggregates, aggregate output, inflation, and unemployment. So this is the aggregation. Aggregation combine many individual markets into one overall market। जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर हम टेलीकॉम सेक्टर को कहेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर में देयर इज जियो आल्सो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, BSNL, but overall it is a telecom sector। But for the whole market in the macroeconomics, the whole market does not have only the telecom sector, but it had also automobile sector, means कार, टू व्हीलर, बड़ी ट्रक, बस का जो मैन्युफैक्चरर है इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर कहते हैं। देयर इज आल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर आप जान ही रहे हैं। देयर इज आल्सो सर्विस सेक्टर, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ, education, transport, all these means all these market, this is the overall market। So microeconomics talks about a single market, telecom sector, telecom market। लेकिन हम टेलीकॉम मार्केट को लेकर के इकोनॉमी, भाई टेलीकॉम मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन हो रहा है। बट अगर हम देख रहे हैं कि गैस का भी दाम बढ़ रहा है, सब वेजिटेबल्स का भी दाम बढ़ रहा है, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग वेजिटेबल्स, इधर टैरिफ रेट भी बढ़ रहा है, उधर किराया भी बढ़ रहा है, तो देन वी विल से दैट द इन्फ्लेशन इज इनकरिंग इन द मार्केट, द इन्फ्लेशन इज इन द मार्केट। व्हाई कैन वी एग्रीगेट
कंपोजिशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन वेरियस मार्केट विच इज नोन एज द एग्रीगेट डिमांड। हमने अभी भी आपको बताया कि हम जब सारे लोगों को, चाहे सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, टेलीकॉम सेक्टर हो और ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, सबको जब एग्रीगेट कर लेते हैं और उनका डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, देन इट बिकम्स द एग्रीगेट मार्केट। इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रो इकोनॉमिक इशूज, माइक्रो इकोनॉमिक इशूज जब हम केवल टेलीकॉम सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द माइक्रो economics. But when we are talking about the growth and development policy of the whole economy, then it becomes important to talk about the aggregate demand and aggregate supply. During economic fluctuations, market move up or down together. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं, आप पहले आपको थोड़ा सा यहाँ समझना चाहिए। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस यही है, देखिए जैसे एक पैंडेमिक आया, कोरोना का पैंडेमिक आया, the effect was not only one sector, effect was not only on the employment, it was on the production, it was on the transport, it was on the aviation sector, railway sector, सर्विस सेक्टर को आप कह सकते हैं, जैसे होटल, टूरिज्म, सारे सेक्टर पर एक साथ असर आया। एजुकेशन सेक्टर इज टिल टुडे इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। आज भी आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो, तो when the economy and before the corona pandemic, the economy was on its growth, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, ग्रोथ रेट हमारी बहुत अच्छी थी, 5% से 5.5% के आसपास थी, तो ग्रोथ रेट वाज वेरी। आज इकोनॉमी में क्या हो गया है कि ग्रोथ रेट जो जनवरी जो अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर था, जिसको हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, हमारा पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो अप्रैल, मई, जून को हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर को हम सेकंड क्वार्टर कहते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को थर्ड क्वार्टर कहते हैं, और जनवरी, फरवरी, मार्च को फोर्थ क्वार्टर कहते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर था, अप्रैल, मई एंड जून, जब उस समय कोरोना अपने पीक पर था, तो उस समय की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो माइनस में चली गई थी। आप सोचिए, जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर 2019 की बात कर लीजिए, तो then the growth rate was about 5 to 6%, near about 5, more than 5%, near about 6%. Then it was corona pandemic की इकोनॉमी became -23.9%, लगभग 24% के माइनस में चली गई। In the second quarter, which starts in July, August and September, अभी डेटा लेटेस्ट आया है, 2-3 दिन पहले आपने पेपर में पढ़ा होगा, द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज सेट टू बी 7.5%, 7.5% के 7.5% के नियर अबाउट है, 7.5% के आसपास है। तो देन इट इज द this is known as the fluctuation of the market, this is known as the overall up and downs of the market, which is known as the aggregate fluctuations, means macroeconomic fluctuations of the market. Macroeconomics assumes most details, means resource allocation and income distribution, relative unimportant, relatively which is unimportant. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, रिसोर्स एलोकेशन, हाउ मच रिसोर्स, हाउ मच वेल्थ वन सिंगल पर्सन है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो कहा जाता है कि धनी अति धनी होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मीन्स कोई किसी को रोजगार मिल रहा है, someone is getting the job and someone is not getting the job. This is the unequal situation happening in the market.
तो मैक्रो इकोनॉमिक इशूज डील्स विद दिस सिचुएशन कि देयर शुड बी ए same opportunity available for the market, means income distribution should be equal, and opportunities should be available for everyone, and the income should be distributed. जैसे अगर हम किसी एक को, जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में 2000 दिया जा रहा था, तो 2000 ये नहीं कि जो गरीब थे, जो धनी थे, उनको भी दिया जा रहा था. इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी पर्सन्स हु वे आर हैविंग द नीड ऑफ दैट 2000 rupees due to their poverty. This deals the macroeconomic issues, but microeconomic issues ignores all this. इंडिविजुअल सिंस वो क्या करता है कि इंडिविजुअल मार्केट की बात करता है. अब एक फर्म की बात कर लीजिए कि अगर अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी बात करेंगे, तो वो तो यही बात करेंगे ना कि पूर्व कोरोना पैंडेमिक में पूरी इकोनॉमी निगेटिव जा रही थी और रिलायंस का शेयर सबसे ज्यादा हाई हो रहा था. तो कंपनी एज इंडिविजुअल लेवल ऑलवेज टॉक्स अबाउट द प्रॉफिट. कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उनके शेयर मार्केट बढ़ने चाहिए, उनकी शेयर प्राइसेस बढ़नी चाहिए. दिस इज द माइक्रो इकोनॉमिक इशूज. मुकेश अंबानी ने यही एक कोशिश किया कि रिलायंस जियो का विस्तार हो जाए, रिलायंस जियो का एक्सपेंशन हो जाए, वेदर इट इज कोरोना और इट इज नॉर्मल सिचुएशन और इट इज anything maybe, but he will talk about only the growth of the company. वो इंडिविजुअल लेवल पर ग्रोथ ऑफ द कंपनी की बात करेंगे. अब आप कहेंगे कि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी. भाई, एक रिलायंस के अकेले ग्रो करने से इकोनॉमी की ग्रो नहीं हो सकती है. There are so many companies, thousands of the companies in the market. Reliance Jio is not only the single company. लेकिन आपने देखा कि कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में इकोनॉमी तो निगेटिव जा रही थी, बट द जियो रिलायंस का जो शेयर था वो बहुत हाई जा रहा था. दिस इज द डिफरेंस. द माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस may be negative, but माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस may be पॉजिटिव. तो देयर इज ऑलवेज ए डिफरेंस कि रिसोर्स एलोकेशन कैसा होना चाहिए. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सबको इग्नोर करता है. उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है. ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो दिस इज द डिफरेंस. अब यहाँ पर हम सप्लाई एंड डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. तो हमने जैसे शुरू में ही बताया, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो में बात करते हैं तो डिमांड कर्व की बात करते हैं. While we are talking about the macroeconomics, there is a aggregate demand curve. Quantity of domestic product demanded is possible value of price level हम बात करते हैं. यहाँ पर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं. एग्रीगेट सप्लाई में क्या क्या शामिल होता है? क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सप्लाई करते हैं हम. आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप बात कर सकते हैं कि यू कैन टेक द एग्जांपल, केवल हम एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कंपनी सप्लाई. मीन्स बस की अगर ट्रांसपोर्ट की सप्लाई है, कार की सप्लाई है, टू व्हीलर की सप्लाई है. अब आ जाइए सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में होटल की सप्लाई है. होटल अवेलेबल हैं. आप कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं, देयर इज होटल अवेलेबल. whenever you are moving, the network is always available to you. When you are moving, you are getting the transportation facility to everywhere. When you are getting the banking services to every place. This is the aggregate supply. If you are getting all the things at every place, then it is known as the aggregate supply. And whatever you are demanding, what is demanded by the tourist के द्वारा क्या डिमांड किया जा रहा है कि हम मनाली जाए तो देयर शुड बी अवेलेबल द होटल. होटल अवेलेबल है तो हम वहां पर हमको होटल चाहिए. दिस इज द डिमांड. अब ये टूरिस्ट डिमांड हो गया, सर्विस सेक्टर की डिमांड हो गई. हमें बैंक जाना है तो बैंकिंग हमारे घर के पास में अवेलेबल हो. दिस इज द डिमांड फॉर बैंकिंग. आपको एजुकेशन लेना है तो आपको एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन कहाँ अवेलेबल है? आपके घर के पास में अवेलेबल है तो दी बेस्ट है. दिस इज द डिमांड ऑफ द एजुकेशन. अब देखिए,
टूरिस्ट ने होटल की डिमांड किया, एक व्यक्ति ने बैंकिंग की डिमांड किया, आपने एजुकेशन की डिमांड किया, एक व्यक्ति ने टू व्हीलर की डिमांड की। अब सबको मिला दीजिए तो दिस इज एग्रीगेट डिमांड। और इसी सब की सप्लाई करने वाले क्या कहला रहे हैं? एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर देखिए कि टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेफ्टी एंड डिमांड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि डिमांड लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है एंड सप्लाई लाइन हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और ये शिफ्ट इन डिमांड होता है। ये दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई हैव शोन यू जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ द डिमांड कर्व की। लेकिन जब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करते हैं तो द शेप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 0 पॉइंट एंड विल गो लाइक दिस। एंड जो हमारा कर्सर चल रहा है आप ध्यान दीजिए, ऐसे चलेगा कि ऐसे स्टार्ट होगा और यहाँ जाकर के ऐसे हो जाएगा। अभी हम आगे आपको चल करके बताएंगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगा। दिस वाज अ ग्लिम्स टू शो यू द so then supply and demand in macroeconomics, inflation is sustained increase in price level, outward shifts of aggregate demand is there, and recession is a period of time when total output declines and production falls. People start losing their jobs, and there is always inward shift of aggregate demand curve. ये ऐसे होने लगता है जब रिसेशन आता है। तो रिसेशन में जो डिमांड कर्व अभी आपने देखा था कि ये देखिए डिमांड कर्व आपने देखा था कि यहाँ राइट शिफ्ट हो रही है, तो ये कहलाता है एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। लेकिन ये देखिए यहाँ पर आप देखिए D0 से D1 हो रहा है, फ्रॉम हियर यू कैन से पॉइंट E, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था पॉइंट E, दैट इज गोइंग ऑन द पॉइंट A। अब यहाँ पर आप देखिए जब रिसेशन आता है तो क्या होता है, प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड देयर इज ए लेस डिमांड इन द इकोनॉमी। तो देन अब आप देखिए प्रोडक्शन जब घटेगा एंड देयर विल बी ओवर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, देन इक्विलिब्रियम विल कम फ्रॉम पॉइंट E टू B। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड कर्व रिसेशन में मतलब ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड। तो देयर इज ऑलवेज ए लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग इन द रिसेशन पीरियड। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी डील्स विद द इन्फ्लेशन, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट and business cycle and economic growth. This is the and what are issues addressed by the macroeconomics? That is the what determines a nation's long run economic growth, what causes a nation's economic activity to fluctuate, and what causes unemployment.